Good morning, dear students. Today I will discuss the last topic of the elements of load dispatch in the interconnected system of the Unit 5, and this is the part of the power plant engineering subject. This is the outline of the today lecture: introduction, problems of the economic operation, unit commitment, operation cost of a thermal power plant, different constraints in the economic load dispatch, economic dispatch neglecting losses and the no generation limit, economic dispatch neglecting losses and including generator limit, economic dispatch in the power system interconnections, conclusions. These are the contents of the today lectures. This is the main point, elements of the load dispatch in the interconnected system. This is the power plant in which there is a generation line will be presented here. Introduction. In a practical power system, the power plant are not the located at the same distance from the center of load. जहाँ पे भी पावर प्लांट है जरूरी नहीं कि वो सेंटर ऑफ लोड के आसपास ही लोकेटेड हो. एंड देयर फ्यूल कॉस्ट आर द डिफरेंट, उनकी फ्यूल कॉस्ट जो रहती है वो डिफरेंट रहती है. ऑल्सो अंडर द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द जनरेशन कैपेसिटी इज मोर देन द टोटल लोड डिमांड एंड द लॉस. जरूरी नहीं कि जो जितनी भी डिमांड हो रही है उसके हिसाब से आपकी जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो बराबर रहे. हो सकता है वो ज़्यादा रहती है जिस कारण से कि जो उसकी कॉस्ट रहती है वो ज़्यादा महंगी पड़ती है. तो उसको रिड्यूस करने के लिए कॉस्ट को जो अपनी जनरेशन कॉस्ट है उसको कम करने के लिए हमें लोड देखना रहता है कि लोड कितना हमारे पास आ रहा है. दस देयर आर द मेनी ऑप्शन फॉर द शेड्यूलिंग द जनरेशन. उसके हिसाब से हमें शेड्यूल करना पड़ता है जनरेशन को. तो दिस इज द इंटरकनेक्शन सिस्टम इन विच द various power plant which are the interconnected and the power will be produced according to the requirement, according to the demand. कि suppose that कि residential demand अलग रहती है. आप यहाँ पे जो डायग्राम में देख रहे हैं, this is the residential demand. Industrial demand is different, and different loads which is coming from the different sites. The transmission subsection this is presented is here. So if the power is supplying from the hydroelectric power generation system, there will be a chances of the meet the required demand. जितनी भी रिक्वायर्ड डिमांड है उसको मीट करने का काम करता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन. तो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम जो रहता है इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है रियल और रिएक्टिव पावर को शेड्यूल करने के लिए, ताकि उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमाइज किया सके, जिसके कारण से कि जनरेटर जो रहता है वो अलाउ करता है वेरी द within the certain limits so as to meet a particular load demand with the minimum fuel cost. This is the called the optimal cost. And this is the connection system, optimum power flow system. It is used to optimize the power flow solution of the large scale power system. This is done by the minimizer selecting the objective function while maintaining in the acceptable system performance in terms of the generator capability limits and the output of the compensating device. This is the introductions of the इंटरकनेक्टेड सिस्टम. द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन वेरीज फ्रॉम द जनरेटर टू जनरेटर. जनरेटर की जो कॉस्ट है या बोलना चाहिए जितनी भी ऑपरेशन की कॉस्ट है वो जनरेटर टू जनरेटर वेरी करती है, डिपेंड करती है टाइप ऑफ कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी इफिशिएंसी जनरेटर की, स्टार्टअप कॉस्ट कितनी है, और यदि जैसी एनर्जी डिमांड आपकी बढ़ती है जनरेटर की वैसी वो एक्सपेंसिव होती है. तो इकोनॉमिक डिस्पैच जो डिपेंड करता है वो टाइप ऑफ प्लांट पे डिपेंड करता है और सिस्टम पे डिपेंड करता है. And the presentation will be discussed with the thermal power plant where the most widely used, especially in the our system. तो क्या मेन प्रॉब्लम्स आती हैं इकोनॉमिक ऑपरेशंस के लिए? तो इकोनॉमिक ऑपरेशन में कैन बी डिवाइड इनटू द टू पार्ट्स. इकोनॉमिक ऑपरेशन करना तो उसको दो मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक डिस्पैच, दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ द ऑप्टिमम पावर फ्लो. इन दो पार्ट में मेनली डिवाइड होता है कि कितने किस तरीके से उसको डिस्पैच करानी है और किस तरीके से पावर फ्लो ऑप्टिमम करना है. तो इट इज डीलिंग विद द टू टाइप्स ऑफ द generation which deal with the determining the output power of the each plant to meet the specified load in such a way that the overall cost is minimized. That is the problem of the economic dispatch. And the problem of the optimum power flow in which the deal with the minimum loss delivery where the power flow is optimized. तो कोशिश ये की जाती है कि कम से कम पावर का लॉस हो और कोशिश ये की जाती है कि स्पेसिफाइड लोड की कंडीशन पे ही हम पावर को जनरेट करें ताकि इकोनॉमिक डिस्पैच हो सके और ओवरऑल कॉस्ट को हम मिनिमाइज कर सकें. तो ये हाइड्रोथर्मल रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट है जिसमें कि यूनिट कमिटमेंट को बताया जा रहा है कि यूनिट कमिटमेंट क्या होता है. इट इज अ
electrical power production is a large family of the mathematical optimization problem where the production of a set of electrical generator it is coordinated into order to achieve some common target, usually either match the energy demand at the minimum cost or maximize the revenues from the energy production. And this is the necessary because it is difficult to store the electrical energy on a scale comparable with the normal consumption. This is the constraint in the unit commitment. क्या क्या constraint हो सकते हैं? That is the spinning reserve. It is the total amount of the generation available from the all units synchronized on the system minus the present load and the loss being supplied. That is called the spinning reserve. And it is the must carried out the loss of the system frequency. It is must allocated among the fast response. This allowed the automatic generation cost. And this is the another type of the unit commitment, thermal unit constraint and the hydro constant. Thermal unit constant mean objective of the minimum of the time and the minimum downtime crew constant. तो once the unit is running it should not turn off the immediately, उसको तुरंत shut down नहीं किया सकता है. और minimum downtime once the unit is decommitted it cannot be turned on the immediately. यदि यूनिट ऑलरेडी शट डाउन है या बोला चाहिए पुट ऑफ है तो उस केस में उसको इमीडिएटली टर्न ऑन भी नहीं किया सकता. प्री कॉन्स्टेंट में प्लांट जो है दो या दो से अधिक यूनिट से मिलकर बना रहता है जिनको कि एक साथ टर्न ऑफ नहीं किया सकता. तो उस केस में हमें अलग से उनके लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है. हाइड्रो कॉन्स्टेंट में यूनिट कमिटमेंट कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द शेड्यूलिंग ऑफ द हाइड्रोलिक यूनिट and the must run constant it is be compulsory जहाँ के startup बहुत जरूरी रहता है. And the fuel constant some plants cannot be cooperated due to the deficient fuel supply. Then the operation cost of a thermal power plant in the graph there are the three types of the need: quality, efficiency and the cost. So cost should be the minimized, efficiency should be more and the quality would be more accurate. The factor influencing the power generation at the minimum cost or the operating efficiency of the generator, fuel cost and the transmission losses. The most efficient generator in the system does not guarantee the minimum cost as it may be located in the area where the fuel cost is high. Operation cost of a thermal power plant. If the plant is located far from the load center, transmission loss may be considered higher and hence the plant may be the overly uneconomical. Hence the problem is to be determine the generation different plants such that the total operating cost is minimum. Power plant consists of the several generating units are the constructed investing huge amount of the money fuel. Operation cost of a thermal power plant it may be of the fuel cost is a major portion of the operating cost and it can be controlled. Therefore we shall consider the fuel cost alone for the further consideration. There is an input where the boiler fuel is supplied and this fuel can be used for generation of the steam, and the steam after the producing from the boiler side passing through the steam turbine where the G is the output generator device, it is the output where the thermal energy is converted into the mechanical energy, and after that this energy can be converted into the electrical manner. Auxiliary power system can be connected with the generator device and the input to the thermal power plant is generally measured in the BTU per hour. जितना भी इनपुट आप यहाँ पे दे रहे हैं ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर के बेस पे मेजर किया जाता है और आउटपुट जो रहता है वो मेगावाट के रूप में यहाँ पे निकल के आता है. And simplified input and output curve of a thermal unit known as the heat rate curve. This is called the heat rate curve and represented in this graph. The input output curve of their heat rate curve is shown in the figure where the fuel input it is represented is here and this is the cost where the per unit कितनी कॉस्ट निकल के आ रही है डिमांड के हिसाब से यूनिट के हिसाब से वो देखनी रहती कॉस्ट. दिस इज द ग्राफ and the operation cost of a thermal power plant equation can be represented in this graph. An important characteristics by plotting the derivative of the fuel cost curve and the incremental fuel curve is also deriving in this curve. The total operating cost include the fuel cost maintenance and these costs assumed to be are generally included in the incremental fuel cost curve. And this is the graph, this is a point where the operation cost of a thermal power plant can be calculated by the three parameters
एज्यूमिंग द वेरियस वैल्यूज ऑफ द टोटल प्लांट आउटपुट, कितना आउटपुट है प्लांट का उसके हिसाब से हमें एज्यूम करना पड़ता है। दूसरा, कैलकुलेट द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंटेड फ्यूल कॉस्ट लैम्डा ऑफ द प्लांट, जितनी भी वैल्यू है उनको इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट के रूप में हमें देखना रहता है। एंड द सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द लैम्डा फॉर द लैम्डा 1 लैम्डा 2 इन द इक्वेशन फॉर द incremental fuel cost of each unit to calculate its output। तो आउटपुट कितना अपने को मिल रहा है या मिल सकता है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है। तो इक्वेशन कैन बी डिराइव इन द below this curve। different constraint in the economic load dispatch where the voltage constant and the generator constant are represented in the equation form। different constraint in the economic load dispatch, it is represented in the graph। the constant is represented by the this is the pipe tube, running spare capacity constant, transmission line constant, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस कांस्टेंट, कितने कांस्टेंट अपने पास हो सकते हैं उसके हिसाब से हमें देखना रहता है। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच नेग्लेक्टिंग लॉसेस एंड द नो जनरेटर लिमिट, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच को हमें काउंट करना है जहां की लॉसेस को नेगलेक्ट कर देना है, जनरेटर की कोई लिमिट नहीं है, वहां पे भी यदि बात करेंगे तो सिंपलेस्ट इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम इट इज द केस व्हेन द ट्रांसमिशन लाइंस लॉसेस आर द नेगलेक्टेड। दैट इज द प्रॉब्लम मॉडल डज नॉट कंसीडर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड द लाइन impedance। is instance the model assume that the system is only one bus with the all generation and the load connected that is shown in the systematically। since the transmission losses are the neglected, the total demands is the sum of the all generation and the cost function is the plant represented by the equation that is the CT is the plant cost and the alpha beta and the gamma, these are the constant factors। and there is a no when the no generation limit, there is a equation is deriving in this form where CT is the total production cost and CI is the production cost of the ith plant, P is the generation of the ith plant and the PD is the total load demand and the NG is the total number of the dispatchable generating plants। and the economic dispatch neglecting the losses and the no generator limit is represented by this equations। economic dispatch neglecting losses and the no generator limit in this represented in this equation form। this is the bar graph where the power of each plant megawatt is represented without dispatch is represented by the blue curve and the with dispatch represented by this curve। तो विदाउट डिस्पैच आप देखेंगे तो ज्यादा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बीच वाले में comparing to the either side of that। and the P1, P2 and P3, the P2 plant is giving the more without dispatching and the P3 and P1 where the with dispatch the plant is give the more power of plant and represented by the equation F1, F2 and F3, that is the fuel cost। this is another equations where the economic dispatch neglecting the losses and the including the generator limit, जब generator limits को include कर दिया गया तब equation will be changed। and this is the Lagrangian conditions complement to the include the inequality constant represented by the equation। as soon as the plant reaches the maximum or the minimum, the plant becomes the pegged at the time in effect the plant out becomes a constant and only the unviolated plants must be operated at the equal incremental cost। this is the equation represented in this form and the bar graph is showing the without limit and the with limit of the different power plant, that is the P1, P2 and P3 represented and the 450, 470 that is the different power plant capacity and the P2 is at 325 and the 305 that is the different power capacities and the P3 is the 200 of the same capacity of the power plant। this is the economic dispatch including the transmission losses and the economic dispatch transmission losses including the transmission losses represented by the equations economic dispatch including the transmission losses represented by the equations। they are the equation where the economic dispatch including the transmission losses represented by the equations and the power system interconnection, and that makes system the more of a generation plant can be covered of other units, and if the unit area governing action from the unit in all connected area will be increase the generation output to make up the deficient unit until it is brought to the online again।
economic dispatch in a power system interconnection. Why do we need a power system interconnection? Interconnection ही क्या needed है? Because of the different plant having the different capacity. So that's why the if the interconnection is done, that's why the demand can be approached as per the needed by the customer or the consumers. The interconnected system may generally require a small generator capacity, and the better economy of the operation is attained when the utilities are the interconnected. These situations take place if the interconnected system work at a different incremental cost. Then the types of the power interconnected, capacity interconnection होता है. Normally जो power generation की है जो availability है, यदि predicted peak load के से आपकी जो है ज़्यादा रहती है उसके हिसाब से capacity interconnection किया जाता है. दूसरा है डायवर्सिटी इंटरकनेक्शन कि डेली बेसिस पे कितनी डिमांड आ रही है उसकी बेस पे इंटरकनेक्शन सिस्टम को फॉलो किया जाता है. तो उसमें दो तरह के लार्ज सिस्टम को जो है इंस्टॉल करते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ द इंटरकनेक्शन कैन टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टम whose peak load depends on the season of the years. Energy banking system in which the occurs hydro system is predominantly thermal power system. थर्मल पावर सिस्टम में भी आप देखेंगे या बोलना चाहिए पावर प्लांट में भी देखेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट इट इज द मोर सुटेबल फॉर द पीक रीचिंग द और अप्रोचिंग द required load capacity during the high water runoff period. The hydel power plant has the energy to spare and sell it to the conversely the hydro power system may also need to the during period the low runoff periods. Types of the power energy system in the fourth part is the emergency power interconnection. कभी इमरजेंसी यदि पावर जनरेशन की रही जैसे कि आपका स्नोफॉल एरिया जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे भी जरूरत पड़ती है तो उस तरह के इंटरकनेक्शन सिस्टम में इमरजेंसी पावर इंटरकनेक्शन सिस्टम को अप्लाई किया जाता है. एंड द लास्ट वन इज द इन एडवेंट पावर एक्सचेंज जहाँ की ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम नहीं परफेक्ट होता है उसके हिसाब से हम इसको फॉलो करते हैं. Since the power system interconnection is a large system and also has a many constraints like the transmission line capacity constraint, transmission line loss and the limit generation frequency constraint, तो अपने को चूज करना पड़ता है इकोनॉमिकल या ऑप्टिमल कि किस तरीके से पावर को हम डिस्पैच कर सकते हैं. एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेड एसी सिस्टम वन वेयर द 60 हर्ट्ज bank is working and the AC system 2 where the 50 hertz is also is working is here. So what is the economic load dispatch? The three areas are the interconnected with each other. The fuel cost function for the three areas in the given by F1, F2 and F3. The area A1 that is the PD 200 megawatt, area 2 200 megawatt, area 3 जो प्रोडक्ट डिमांड है या आपकी डिमांडेड रहती है that is a 200 megawatt. Economic dispatch in a power system interconnection. Three areas are the interconnection with each other. It is represented in the bar graph also. Conclusion, the economic dispatch is the operation of the generation facilities to produce energy at the lowest cost. And the unit commitment is concerned with the determining which units to be turned on or off. Penalty factors are used to consider the impact of the losses in a large interconnected network where the power is transmitted over the long distances. And the case of the economic dispatch without the transmission losses and the generator constraint give the better result. And the last one is the interconnection power system makes the system more reliable and the better economic of the generation. So there are the number of the parameter where the conclusion can be producing the same things where the energy can be produced at the lowest cost and the unit commitment which unit to be turned on or off. तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सी यूनिट को हम चालू रख सकते हैं कौन सी यूनिट को बंद रख सकते हैं. पेनाल्टी फैक्टर को और इस्तेमाल किया सकता है या यूज करते हैं ताकि जो जितने भी लॉसेस इंटरकनेक्ट सिस्टम में हो रहे हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकें और पावर को बेहतर तरीके से ट्रांसमिट कर सकें. और जितने भी आपके इकोनॉमिक डिस्पैच के केसेस रहते हैं उनमें ट्रांसमिशन लॉसेस और जनरेटिंग लॉसेस को या जनरेटिंग कांस्टेंट को देखा जाता है ताकि हम बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर सके. एंड द इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम जितना भी रहता है वो सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाता है, रिलायबल बनाता है और इकोनॉमिकल बनाता है. तो दैट इज द टुडे लेक्चर.